Assalamu alaikum, students. In this lecture, we will discuss about the drug receptor theory. As we have been studied this receptor or drug theory or drug receptor interaction theory in pharmacology, but in this medicinal chemistry course, we will summarize this drug receptor theory with respect to the activation of the drug, agonist activity and the antagonist activity of the drug. We just quick review the different theories of drug receptor interactions. As the drug receptor interaction theory is basically based, as we know that receptors which is present in our body, there are a number of receptors available in our body, and any drug which are responsible to produce the pharmacological response or biological response or biological activity in the body. So there must be a way or a part which is available in our body which are responsible to welcome the drug. So those parts are known as receptors, as receptors are integral proteins that are made up of polypeptide macromolecules embedded in a uh, uh, phospholipid bilayer of the cell membrane. Normally, in our body, the receptors or receptor is also known as macromolecules. There are different types of receptors like proteins, ions, channels, DNA and RNA strands. So normally receptors are in a bound state in our body, not freely available. But when the drug come into the body, enters into the body, the receptor or the specific receptor with respect to the drug tends to release or dissociate from its site, and free or the bound state of the receptor is going to be free, and it will receive the drug and bind this drug and in order to produce the pharmacological response. So there are two things in drug receptor interaction. First thing is the rectification rectification and the second thing is the amplification. The rectification means is the identification or identity से निकला है, identify the target. Every drug has specific target receptor, so it will rectify the target, that is rectification. And amplification means after binding with the receptor, it will amplify the pharmacological response, it will implicate, it will produce the desired effect, pharmacological response. So rectification and amplification both works together with respect to the drug receptor interaction. So the years several hypotheses or the theories have been proposed, which accounts the ability of a drug to bind or to interact with the receptor or a macromolecule and amplify or elicit or produce a desired response, biological response, or any activity in the body. So, generally, if we have to understand the concept of drug and receptor, one thing is the general. In general, we must is understand that every drug has a specific receptor, and there are certain areas on the surface of the receptor which are available for the drug or the functional groups of the drug to make them interacted in order to produce a pharmacological response. So the basic theory was proposed a long time ago, that was based on lock and key model, lock and key hypothesis. As we know that every lock has its own specific key to unlock or open the lock. This theory, same lock and key theory or locking and unlocking phenomena, will apply on the drug and receptor interaction. So the drug molecule must fit into the active site of the receptor in order to produce the or unlock the lock or unlock the pharmacological response. So there are two things. One is the lock and key model, and another thing is the drug and receptor. ये दो फिगर आपके पास दी गई हैं, और एक आपके पास कॉमन एग्जाम्पल की मदद से बताया गया है और एक आपको ड्रग रिसेप्टर की एग्जाम्पल की शक्ल में बताया गया है. यू कैन सी दैट ये रिसेप्टर जो है और ये सॉरी ये लॉक है. इस इसको
इसको रिसेप्टर को हम लॉक कह रहे हैं और इसको ड्रग को हम की कह रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ड्रग दी गई है और ये रिसेप्टर दिया गया है। तो और आप देखें यहाँ पर इसके जो हैं अगर देखो तो तमाम की तमाम साइड जो रिसेप्टर के ऊपर ऑक्यूपाई हो रही है। ठीक है, इस तरीके से ये लॉक जो है इसकी जो की है, इसके तीनों जो ग्रूव्स हैं, इसको इसके लिए इस ग्रूव्स के अंदर की जो है इजीली पेनिट्रेट करेगी, एंटर करेगी और बाइंड होगी और जो है इसको अनलॉक करेगी। अगर इस की शक्ल कुछ इस तरह से होती तो ये इसके अंदर इस लॉक को अनलॉक नहीं कर सकती थी। तो लॉक एंड की जो हाइपोथेसिस है, जिसकी मदद से आपको रिसेप्टर और ड्रग थ्योरी का इंट्रैक्शन मैकेनिज्म जो है आसानी से समझ में आ सकता है। ये बहुत ही आसान थ्योरी है, जिसके बेसिस पर आप बता सकते हैं कि every lock has a specific key, every receptor has a specific drug which is responsible to unlock the lock and responsible to uh, produce the pharmacological response in the body. So the first theory was proposed by Gatman and Clark, which is known as occupancy theory. According to this theory, the intensity of the pharmacological response is directly proportional to the number of receptors occupied by the drug. जितने जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी की जो इंटेंसिटी है वो बेस करती है अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसेप्टर्स। जितने ज़्यादा रिसेप्टर्स ऑक्यूपाइड होंगे ड्रग्स से, उतना ज़्यादा फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस आपका मैक्सिमम रिस्पांस आएगा। तो डी मीन्स ड्रग, आर मीन्स रिसेप्टर। जितना ज़्यादा ड्रग रिसेप्टर कम्प्लेक्स बनेगा, उतना ज़्यादा आपके पास रिस्पांस, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी आपके पास मैक्सिमम रिस्पांस आएगा। So there are two things according to this theory. Number one is the affinity, and the second one is the intrinsic activity or the efficacy. Affinity is basically based on measuring the ability of the drug to bind with the receptor. ठीक है, ड्रग की एबिलिटी जो कि रिसेप्टर से बाइंड कर सके, दैट इज द एफिनिटी ऑफ द ड्रग। वाइल द इसको हम कहते हैं कम्प्लेक्सेशन ऑफ द ड्रग विद रिसेप्टर्स को हम एफिनिटी भी कहते हैं। और इंट्रिंसिक एक्टिविटी और एफिकेसी इज द इनिशिएशन ऑफ द फार्माकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल रिस्पांस, or to produce a biological activity, or to produce a maximum response when the drug receptor are going to be complexed to produce a response. So the intrinsic activity or the efficacy is based on the maximum response of the drug. According to this theory, this addresses two things: agonist and the antagonist activity. In the case of antagonist activity, antagonist can bind a drug, and if the drug is antagonist, so it will bind tightly with the receptor, so it has a great affinity, but devoid of activity. It will not produce the activity. The antagonist means antagonize the mechanism, antagonize the response. So it will only the second thing is based on agonist. If the compound is agonist, so if compound that is agonist for one receptor, it may be an antagonist or inverse of agonist of another receptor. बॉडी के अंदर हो सकता है कि एक ड्रग जो है वो किसी रिसेप्टर के लिए एगोनिस्ट बिहेवियर रखती हो और दूसरे रिसेप्टर के लिए एंटागोनिस्ट बिहेवियर रखती हो। तो दो चीज़ को एड्रेस करता है, एक एगोनिस्ट को एड्रेस करता है और एंटागोनिस्ट को। ठीक है, occupancy theory will only addresses two things: the agonist activity and the antagonist activity of the drug. But there is no partial agonist concept according to this theory. इस theory का जो drawback है, जो उसमें partial agonist को जो है वो partial agonist partial agonist को partial agonist activity को address नहीं किया गया. That is the drawback or limitation of this occupancy theory. Second theory is rate theory. Rate theory is basically proposed by Patton. Scientist name was Patton. According to this theory, the response of the pharmacological response is basically based on or is proportional to the rate of drug receptor complex formation, number of encounters, number of encounters between the receptor and the drugs. Maximum the number of encounters or maximum the number of drug receptor complex formation per unit time will be responsible for the pharmacological activity. So the encounters of the drug or number of encounters is basically elaborate two things. Uh,
which is based on association and the dissociation of the drugs. So the rate theory is basically with respect to the time. जितना number of receptors occupied होंगे per unit time, जितना number of association होगी और dissociation होगी drug की with the receptor, that will be responsible for the agonist and antagonist or partial agonist activity of the drug. So this theory addresses that the rate of association and dissociation or number of encounters of drug with the receptor. So therefore, the rate theory suggests explains that the pharmacological activity is a function of the rate of association and dissociation of the drug with the receptor, and not the number of occupied receptors. Okay, ये number of receptor ये जो है occupancy theory को जो है वो कहते हैं नलीफाई करती है या उसके अगेंस्ट है कि इस कॉन्सेप्ट को इसमें में मुतारफ़ कराया गया है, इंट्रोड्यूस कराया गया है कि रेट थ्योरी ये सजेस्ट करता है कि फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो बेस करता है number of encounters, the number of association and the number of dissociation of drug with the receptor. It will not address the number of occupied receptor. ठीक है, तो activity is basically based on the association or dissociation of drug with the receptor. ठीक है, ड्रग का एसोसिएट और डिसोसिएट होना रिसेप्टर के साथ, each association will produce a stimuli. Each association जितनी दफ़ा आपकी बाइंडिंग होगी वो एक स्टिमुलस जनरेट करेगी. इन केस ऑफ एगोनिस्ट, अगर एगोनिस्ट ड्रग की बात करें, द रेट ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन इज फास्ट. एगोनिस्ट ड्रग के अंदर जो एक्टिविटी है फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स अगर एगोनिस्ट है उसमें एसोसिएशन और डिसोसिएशन वुड बी फास्ट. ठीक है, जस्ट लाइक अगर आप उसको, अगर आप दोनों हाथों को अपने रखें, दोनों हाथों के फिंगर को एक दूसरे के साथ मर्ज करें, तो इफ़ यू डू दिस फास्टली, दैट इंडिकेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन. यानी कि दोनों हाथों का एक दूसरे के साथ शेक करना, एक दूसरे में मिलना और बाहर की तरफ आना, एसोसिएशन और डिसोसिएशन के फिनोमेना को आसानी से समझने में आपके लिए हेल्पफुल होगा. So the rate of association and dissociation will addresses the faster the association and the faster the dissociation will address the agonist activity. In the case of antagonist type of drug, the rate of association will be fast, but the rate of dissociation will be slow. Association जो होगी antagonist के अंदर होगी वो fast होगी, while dissociation will be स्लो इन द केस ऑफ एंटागोनिस्ट. ऐसा क्यों है? ड्रग तेजी से बाइंड तो करेगी रिसेप्टर के साथ, क्योंकि एंटागोनाइज करना है, एंटागोनिस्ट इफेक्ट देना है, तो डिसोसिएशन क्या होगी? स्लो होगी. ठीक है, इसी तरीके से पार्शियल एगोनिस्ट अगर आपके पास ड्रग है, इट विल बी बेस्ड ऑन द इंटरमीडिएट ऑफ द रिसेप्टर ड्रग एंड रिसेप्टर कम्प्लेक्स एट अ डिसोसिएशन रेट. तो इंटरमीडिएटली आपके पास जो है वो ड्रग रिसेप्टर कम्प्लेक्स जो है वो एसोसिएशन डिसोसिएशन जो है वो एट एन इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर होगा, इंटरमीडिएट स्टेट के ऊपर होगा. ठीक है, इसी तरीके से आपके पास थर्ड थ्योरी, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, दैट वाज प्रपोज्ड बाय कॉस्टलैंड साइंटिस्ट. ओरिजिनली साइंटिस्ट प्रपोज दैट फॉर द एक्शन ऑफ सबस्ट्रेट्स विद एंजाइम. सबस्ट्रेट ये ड्रग को कह रहा है. द एक्शन ऑफ ड्रग या सबस्ट्रेट विद एंजाइम, एंजाइम मतलब रिसेप्टर. फॉर द एक्शन ऑफ सबस्ट्रेट्स विद एंजाइम, it was proposed by Koshland, but it could apply to drug receptor interaction as well. ये सबस्ट्रेट एंजाइम के अलावा आपके पास ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन पे भी अप्लाई करता है. अब ये सबस्ट्रेट और एंजाइम का फिनोमेना आप समझ लें कि सबस्ट्रेट आपके पास डिफरेंट सबस्ट्रेट्स बॉडी के अंदर अवेलेबल हैं और एंजाइम्स भी अवेलेबल हैं. एंजाइम के ऊपर मौजूद जो है सबस्ट्रेट एरिया होता है जहाँ पर ड्रग जो जाके बाइंड करती है. ठीक है, तो जो ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, एक्टिविटी, वो बेस कर रही है अवेलेबिलिटी ऑफ द सबस्ट्रेट और द orientation or the flexibility of the substrate on the surface of the enzyme. So this same theory will be applied on the drug receptor interaction as well. According to this theory, the receptor need not necessarily exist in the appropriate conformation required to bind the drug. As the drug approaches the receptor, a conformation change is introduced which orients the essential binding sites. क्या मतलब इसका? इसका आसान अगर समझना चाहिए है, इसकी एग्जांपल अगर आसान लफ्ज़ में समझना चाहें कि दो लोग आपस में अगर लेट्स सपोज आई एम टीचिंग यू और मैं आपसे शेक हैंड करना चाहूँ, आप बैठे हुए हैं और मैं खड़ा हूँ, और व्हेन वी आर एट अ डिफरेंट स्टेट, व्हेन यू आर एट अ डिफरेंट conformation or different position, we have to shake hands.
तो क्या होगा आपके पास अप्रोप्रिएट वे क्या होगा, या तो मैं बैठ जाऊँ आपसे हाथ मिलाने के लिए, या आप स्टैंड अप हो जाएं मुझसे अप्रोप्रिएट कन्फर्मेशन के अंदर शेक हैंड करने के लिए। यही सेम फिनोमेना यहाँ पे भी समझाया गया है कि व्हेन द ड्रग अप्रोचेस टू द रिसेप्टर, जब ड्रग जो है रिसेप्टर के पास पहुँचती है, तो देयर विल बी अ फिनोमेना ऑफ चेंज, इसको हम कहते हैं कन्फर्मेशनल चेंज। वो ड्रग जो है वो रिसेप्टर के अंदर जो उसके सबस्ट्रेट एरिया है जिससे वो बाइंड होगा, उस वो उसकी शक्ल को चेंज करेगा, जिसको हम इंड्यूस कह रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर चेंजेस कहलाएगा, जिसको हम कहते हैं कन्फर्मेशनल चेंजेस को इंड्यूस कराएगा। यानी कि वो उसकी जो उसकी जो पोजीशन है उसको चेंज करेगा फॉर द फंक्शनल ग्रुप और binding of the drug receptor. So this orients the essential binding sites of the receptor or expose the binding site of the receptor towards the drug functional group. So according to this theory, the conformation in the receptor could be responsible for initiation or for producing the maximum response or for giving the biological activity of the drug in the body. The receptor या enzyme was suggested to be elastic and could return to its original conformation after the drug was released. ये वही चीज़ बताई गई है कि ड्रग रिसेप्टर के अंदर क्या होगी, ड्रग रिसेप्टर जो है एंजाइम आपका जो बॉडी के अंदर है वो फ्लेक्सिबल होगा, इलास्टिसिटी मीन्स फ्लेक्सिबल होगा। जैसे ड्रग उसके पास पहुंचेगी तो ड्रग उसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस लेके आएगी, उसकी शक्ल को चेंज कराएगी फॉर मैक्सिमम बाइंडिंग इंटरेक्शन विद द रिसेप्टर। स्पीकर के अंदर यही फिनोमेना को, इस कॉन्सेप्ट को बताया गया है। दिस वन येलो वन इज द एंजाइम एंड द ब्लू वन इज द इन दिस इज द सबस्ट्रेट। ओके, इसको ड्रग कह लें। तो ऐसा ही है कि व्हेन दे आर अप्रोचेस टुवर्ड ईच अदर रिजल्टिंग इनटू, अगर आप देखो तो इसका शेप कुछ चेंज है और इसका शेप कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो ये शेप एक दूसरे से मैच करता है, ये शेप इससे मैच नहीं करता। ठीक है, इसी तरीके से ये स्पाइक है आपके पास और एक कर्व है, तो ये दो शेप मैच नहीं करते। तो क्या होगा, ये रिसेप्टर के अंदर ये साइड और ये साइड जो है वो जब जैसे ही ड्रग इस रिसेप्टर के पास पहुंचेगी, इट विल टेंड टू इंड्यूस सम चेंजेस, इंड्यूस सम conformational changes in order to make them fit, best possible fit with each other, in order to produce a drug receptor or enzyme substrate complex. So what will happen as a result of induction of the conformational change in the shape or stereochemistry of the enzyme, the the receptor will tend to change its shape in 3D space and make it favorable to bind with the receptor and occupy all the possible side with the drug or the substrate. So this basically explains the phenomena of conformational change or induction of conformational change in the shape of the receptor when a drug is approaching towards the receptor site. So the conform यही points इसमें लिखे गए स्लाइड में जो हमने डिस्कस किया, the conformation change need not occur only in the receptor, the drug also undergo the conformational change. ये बात सिर्फ रिसेप्टर पे ही नहीं अप्लाई होती, ये एंजाइम यानी एंजाइम पे ही अप्लाई नहीं होती है, ड्रग के अंदर भी अप्लाई होती है। Drug and receptor both could be could undergo the conformational change. Both should be flexible. There must be some flexible groups, flexibility between the receptor and the drug in order to make them attracted towards each other. According to the theory, agonist an agonist would induce a conformational change and produce a response. An antagonist would not would bind without producing any conformation change, and a partial agonist would cause a partial conformation change. ये तीनों चीज़ों को समझ लें कि हमने जो इस फिगर के समझा, ये आपके पास एगोनिस्ट बिहेवियर को बता रहा है कि इसमें कम्प्लीटली रिसेप्टर ड्रग जो है चेंज होंगे, अपनी ओरिएंटेशन को, शेप को चेंज करेंगे इन ऑर्डर टू मेक द कॉम्प्लेक्स stable complex and to produce the pharmacological response agonist activity. While in the case of antagonist के अंदर क्या होगा कि यही चीज़ जो है एंटागोनिस्ट के अंदर ये दो साइड्स नहीं मिल रही थी, यानी कि ये ये साइड भी नहीं मिल रही थी, ये भी साइड नहीं मिल रही थी, ये क्या होगा, जाके ऊपर जाके इस रिसेप्टर के एरिया को बाइंड कर ब्लॉक कर देगा। बाइंडिंग लूज बाइंड नहीं होगी पर इस एरिया के ऊपर जाके ब्लॉक कर देगा, एक्सपोज नहीं करेगा। ड्रग जो है इस एक्टिव एरिया को एक्सपोज होने नहीं देगी और एगोनिस्ट एक्टिविटी, जिसके नतीजे में क्या होगा, ये एंटागोनिस्ट एक्ट करेगा।
while agonist partial agonist के अंदर कुछ एरिया बाइंड होंगे, कुछ एरिया नहीं बाइंड होंगे, जो कि partial agonist एक्टिविटी को फेवर करेगा. This theory, induced theory, can be adopted from the rate theory, and agonist would induce a conformational chain receptor, resulting in the conformation to which the agonist binds less tightly and from which it can dissociate more easily. Okay, so the last theory is based on activation aggregation theory, and it's also known as macromolecular. इस theory को हम macromolecular perturbation मैक्रोमोलिकुलर पर्टिवेशन भी कहते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इवन इन द एब्सेंस ऑफ ड्रग अगर मौजूद भी ना हो बॉडी में, receptor is in a state of equilibrium, dynamic equilibrium between activated state जिसको हम relax और active form के अंदर कहेंगे, उसको indicate किया गया R नॉट से, और दिस R नॉट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, और इन इनएक्टिव फॉर्म दो स्टेट के अंदर होगा. रिसेप्टर इन आवर बॉडी इज इन द डायनेमिक इक्विलिब्रियम, एक आर नॉट जिसको हम एक्टिव फॉर्म कह रहे हैं, और एक इनएक्टिव फॉर्म जिसको हम टी नॉट कह रहे हैं. ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगी. So this is the active form and this one is the inactive form. So this, there must be an equilibrium between the activated form and the inactive form of the receptor. So in the body it is in a dynamic equilibrium. ये left side और right side दोनों की तरफ इसकी movement possible है. Using this theory, agonist, अगर मैं agonist drug की बात करें, agonist bind to the R naught form and shift the equilibrium towards the activated form. An antagonist will bind to the inactive side of the T naught, and the partial agonist will bind with both R naught and the T naught. ये ऐसा ही है कि रिसेप्टर के ऊपर दो चीज़ें मौजूद हैं, एक है आपके पास R naught और एक आपके पास T naught. ठीक है, ये रिसेप्टर है. तो अगर आप इसकी बात करें तो इसमें जैसे ही आपका यहाँ पे दो बाइंडिंग साइड हैं, एक आर नोड है और एक टी नोड है. आर नोड जो है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और टी नोड जो है वो एंटागोनिस्ट रिस्पॉन्स के लिए, यानी कि नो रिस्पॉन्स अगेंस्ट द एगोनिस्ट. सो if the drug will bind with the R node, it will be responsible to give the pharmacological response. If it is bind with the T node, and then the antagonist activity will be produced. So this is all from the drug receptor theory. That's all from this lecture. Thank you. Allah Hafiz.